Acha, speaking of bad advertising, I found something. This is from Pakistan International Airways, and Yeah, I saw the. they Oh, that's launched Oh, iconic. their flight to I have not Islamabad. seen this. What is this? So they Bro, It's relaunched too their good. flight from It's Islamabad too to good. Paris. Okay, so this is the advertising they decided to put up, Kautuk. the creative. This is the creative. Oh, Just, just wrong. Just so wrong. I saw. I saw a so tweet. people Somebody are like, said, 1 second, are you advertising or are you threatening कि तू ऐसे Yeah, Eiffel Tower के पास ऐसे पास जा रहे we are coming today. yeah, "Yeah." I bye. think best tweet I saw was, "How would you rate this poster on a scale of 9 to 11?" go. Oh No. no. Oh no. मजेदार. Very funny. सही है. All right. So, the guest on today's episode, when this person was last on a podcast with us, he was something else and we were something else. So, please welcome to the XNG podcast, XIC, Sapan Verma. Yes. Hello. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Allahabad has become Prayagraj and has come back. Well, XIC was Sapan, welcome to an episode of Everybody Wear Black, Don't Tell Sapan. Yeah. Yeah, what the अभी hell? suddenly देख रहा हूँ हम तीनों black में What हैं, is तेरे को. this? to be This fair, shows that this is dark blue. This this is is for why the you are guest. only functional collective. अरे, what happened to the iconic introduction that you used to do every अरे time? हाँ यार, वो बंद हो गया क्या? मैं हमेशा भूल जाता. अभी आ गए तो साथ में करते. चल 3, 2, 1 go. Hello and welcome to another episode of the Internet Set. So, a show where we take random issues, weird facts, such as personal stories, and we talk about it. And welcome Sapan Verma. Wow. Yes. Yes. Hi. Ah, 1x to 2x to 1x again in real time. Yeah. Yeah. But Sapan bro, welcome. कैसा है? Yo, very good, very good. बस घर पे बैठा हूँ, obviously chill कर रहा हूँ और baby sitting like Kautuk. Yeah. यार baby sitting right now. Congratulations bro. Congrats. Thank you, thank you. कैसा कैसा लग रहा है? क्या चल रहा है? मतलब yeah, dude. Please क्या tell चल us, रहा है? tell us I about your think new हाँ. Kautuk will cycle. have. I think now when Kautuk and I meet in the green room, we only talk about these things. Dude, by the way, Sapan, we should talk It's about not this. just you. Even when Kautuk just meets anybody now, that's all Kautuk talks about. No, other. The amazing thing that's happened recently is that when I walk into a green room, there's so many new dads. Like so many of us have Yeah. had kids in this last 3 year, Who? like Anirban, I know. Kenny, I know. Vaibhav, Vaibhav also, Kenny, yes. Rahul Dua. Rahul Dua. also, yeah. Yeah. So many people do it. Like, and it's like for me to like it was so surreal. I asked Weber for I was asking him for tips and stuff, and he's like, "Bro, reels dekh le." Oh yeah, now it's a race to who gets the first special out about being a dad. Yeah. Bro, तुम लोग Dude, तो I actual, also, you I guys are also actual realized that. dads. Okay, y'all have Yeah. lived experience with your child. ठीक है, मैं हाँ. तो बाप, मेरे पास भी बच्चों के शौक है और मैं तो बाप ही नहीं हूँ. Bro, इतने बच्चे हो रहे हैं आसपास. Crazy. Yeah. I हाँ. also realized all the Bombay comics are having girls, all the Delhi comics are having boys. What a I said this in Wow. the green room that day, and somebody said, "Yeah, Delhi वाले लोगों के भाई हो रहे भाई." That's such a great Bro, idea. how old is she now? She is 7 months. 7. Oh, Yeah, wow. Okay. Amazing. crazy, Yeah. तो बता कुछ crazy. स्टोरियां तो बता. अरे, हाँ. एक तो Kautuk, you wanted a child always, or what? You were like that? I was one of those people. You I were? was one of Oh. those people. Yeah. Oh, dude, so मैंने चांदनी को पूरे टाइम बुद्धू बनाया, ठीक है? शादी हुई, she was like, let's have a baby. हम लगा रहे कॉमिक्स बच्चा करते हैं क्या? कॉमिक्स का लाइफ कितना बिजी होता है, पता है? वीकेंड पे ट्रैवल करते हैं, ये करते हैं, रात को सोते नहीं है. Comics can't have children. And that time, Anirban had this very popular set on YouTube. Yeah. It's called I Don't Want to Have Kids. उसका एक सेट हाँ. है, ठीक है? तो मैं चांदनी को बैठ को सेट दिखाया पूरा. He's also comic. He's also saying don't have kids. Cut to 2 years later, Anirban has had a baby. Okay. So she's like, what the hell is this? He also had kids. Now you can't avoid this. ये वो. So then Anirban's new joke, अभी उसका Instagram पे डाला हुआ, उसका नया joke है कि if you want to have a child, 2 parents are not enough. You should have at least 3 parents. So हाँ. you should conceive a child only through a threesome. हाँ. Correct, So then correct. I was like, चांदनी बच्चा करने को Anirban ने हाँ बोल दिया, पर बोल रहा threesome करते हैं. Dude, but ये सब. this is so true. Like the fact that so when you're like just married,
and Yeah. it's just the two of you, you're like, oh Yeah. wow, what a perfect living situation. Just है the ना? two of you. Yeah. Life is amazing. Then you Yeah. have baby, and you're like, dude, we need a much larger family. Yeah. 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 Two-person household, this three-person household not working. Like, Yeah. need. You suddenly start loving your parents more. Oh my God, Yeah. yeah. Bro, but isn't that the biggest boon? Just that, you know, Yeah. you have the in-laws. Because even now, when my parents or Nikita's parents say, "अरे बच्चा बच्चा ये वो," we're like, भाई जब भी होने वाला है ना, in Yeah. our head we just feel like लेके दे देंगे उधर Yes. That is संभालो, exactly what we do. ठीक है? See you when you're 18. All right, Yeah. hey, holiday. Yeah. That is exactly what we do. Right now, we went to Goa. We left her with our parents and went. So I think having parents is the thing. But otherwise, cool, dude. I am तो enjoying it. मुझे लगा था मैं पहले लगा था यार ये बहुत stress होगा. But I'm actually because you know what I realized actually all of us as comics we pretend a lot like हम लोग बहुत busy है. But actually हम लोग कुछ We're घंटा not. busy करते दिन भर. It's surprisingly weird that the amount of time is just spent sitting and just अपन चिल्ला staring at चिल्ला a के screen. सबको स्कीम बता दे. पर वही ना तू कितना काम करते हो दिन भर बैठ के तू 8 घंटे बैठ के जोक्स लिख रहा है क्या कुछ नहीं कर रहा है तो आई क्योंकि रियलाइज मैंने 10 एक्चुअली मिनट में बैठ के कोई जोक लिखा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा कि अरे वाह आज क्या एक जोक लिख दिया खुद को Yeah. इतना अरे वाह ब्रो वेल Yeah, yeah, रिटन. एग्जैक्टली तो आई रियलाइज एक्चुअली बीइंग अ कॉमिक इज क्वाइट बेबी फ्रेंडली उल्टा है क्योंकि हम लोग दिन भर घर पे पड़े रहते हैं कुछ करने को नहीं है सो व्हाइल लाइक योर पार्टनर इज वर्किंग यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ द बेबी एंड एट Yeah, नाइट व्हेन आई and गो फॉर द शो रात को 10 बजे तब तक शी इज गॉन टू स्लीप ऑलरेडी सो इट्स प्रीटी Same. चिल or weekends, which would और be, वीकेंड but then you have to assume that your partner has a regular job, like unless she's yeah working for yeah It helps, L&T yeah, or it really somebody. helps. yeah Yeah. both You're both trying both to of say them can't two be comics comics together can't have a yeah baby. two comics together that's how no two comic relationship survives Yeah, dude, because also Yeah. the material is getting Collectives. divided into half. It's just yeah what dude is happening? material is a big problem Dude, but this is so true. The fact that day duty is mine and night Yeah. duty is Siddhi's. And the only problem is then Siddhi and I barely get to spend any time together now. oh yeah Like yeah that's we're true like ships passing in the mist. yeah मेरे साथ कभी कभी ये भी अजीब होता है कि शाम को ऐसे वो नीचे किड्स प्ले एरिया है बिल्डिंग में तो आई एम द ओनली फादर देयर इट्स ऑल नैनीज एंड मदर्स टॉकिंग अबाउट आज हमने ये बनाया है ये कर रहे हैं एंड नैनीज एंड जस्ट मी स्टैंडिंग देयर इट फील्स डैम Yeah. वियर्ड समटाइम Dude, like like Siddhi yesterday, she called me up from work. हाँ Right. And she's like, what are you doing? I said, nothing. Why? What happened? She's like, no, I haven't spoken to you. So what is up in your life? oh man No, and you're like, yeah, Ira's fine. Yeah, she's sleeping. No. How are you? How Yeah. are you? why are you asking what happened Yeah, did something happen to Ira? Did Yeah. Ira call you? did you find out something about me Dude, also like Yeah. like what I also found is that when you have a kid, like Huh. your perspective on the world also changes, right? Like the yes things around you start looking so much more different, and like you're analyzing things from a very different lens as a father as compared to yeah when you yeah were Hmm. just one londa out in the world. Yeah. Now you think about the future and all. You're like, what will happen? Where will this go? Dude, You become exactly your dad. I've realized. You know, yeah. I realized this once I had Tara that I was like, dude, I am becoming exactly like my dad. All the things that I used to say, why is my dad doing this? You're becoming exactly that person. Yeah. I'm becoming that person, screaming at other building kids and all. I'm becoming that. अरे बॉल ठीक से खेलो ऐसे कौन बॉल फेंकता है like shouting all those things. But बाकी तेरे how are your shows going? Show is good, dude. I have just started the new tour, and it's called Lower Back Pain. Hilarious. Hilarious. Because I think that's the stage that we are going through. तो अभी चल रहा है मस्त मैं किया मुंबई में शो किया बहुत मजा आया कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे शो रेडी है मस्त किल किया फिर लास्ट वीकेंड अहमदाबाद गया शो किया आई वाज लाइक ये शो बिल्कुल रेडी नहीं है Yeah. either the show is not ready or it's an Ahmedabad problem Yeah. But it's important to have one of these shows in the tour. yeah Because suddenly Yeah. फिर अरे एक मिनट यार Yeah. I'm taking it too easy and you start yeah अरे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो अभी आई थिंक Kautuk will relate to this is you know of course I have a couple of jokes about becoming a dad having baby and all and it's damn difficult to try these jokes at open mic Oh. shoot Habitat if you go Habitat is full like you know समय crowd full young crowd you know 16 18 year old who wants like अभी ये चल रहा है dark comedy सबको ऐसी jokes चाहिए
तो ऐसे एक दो कॉमिक मेरे पहले से एजी जोक्स कर रहे हैं डेथ के बारे में, इसके बारे में, फैट शेमिंग चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है उधर ओपन माइक में, और सो गाइस आई जस्ट बिकेम अ फादर एंड दे लाइक व्हाट द फक वी डोंट वांट टू नो अबाउट दिस, टेल अस सम डार्क जोक ब्रो. Do a dead baby joke. हाँ, अबे Yeah, Yeah. Oh I my just God. became a father. I'm not going to do it. yeah, it is exactly that. Are you also facing the same thing? 100%. 100%. Like when I go up on stage, like I ask people, like how many of you are parents here? One person at the back would be like, like one dirty noise would come out. So, and then the rest of them, just very brand new. Like they want to have, brand new. they want to basically just have all the stuff that leads to babies, but they don't want to have babies. Yeah. Exactly. Tell us how you had the baby. Yeah. What position were you in? They want the sex jokes and the dark jokes and all. तो this is a big problem. तो अभी अनिर्बाण और मैं एक शो चालू कर रहे हैं डैड मटेरियल नाम से. क्या बता which मेरे is को just which is just dads trying jokes. We're selling it like that. Dad Amazing. material. उधर ऑडियंस भी आ रही है जो डैड ड्यूटी करके थक गए ना, अरे चल करके जाके बैठते हैं और उधर तुम लोग वही जोकर, हाँ मेरे साथ भी यही हुआ, हाँ मैं भी नहीं सो पा रहा. Yeah. Sapan, you did one mic stand, so I'm sure you have Yes. some fun tales. मतलब whatever you're okay with saying. तो बता थोड़ा one mic stand. By the way, this new podcast that you episode you did with Javed Akhtar was one of my favorite ones that I have watched और मैं पूरा देखा. मतलब you had Javed Saab in top form. Brother, he's too good. He's too good, man. I had to chase him for 1 year. Okay, एक साल तक मैं पीछे पड़ा रहा. So I was like, ये worth chasing है. ये मेरे को लगा था ये तो करना चाहिए. So it was too good. He came and he was on, dude. कुछ brief कुछ नहीं करना पड़ा. कुछ नहीं. He came. I just told him कि sir, 3 comedians are there. Audience is sitting. Just come, you have fun, say whatever you want. He was like, okay. And he has gone and killed it. So he was too good. So now the problem is that Javed has set the bar too high. Yeah. To get next. So now that's the problem. So now I'm going the opposite problem. Like किसी को Gulzar. unexpected. Now get Gulzar. सब वही and बोल see रहे हैं. who- सब comments वही है. सब comments है. After जावेद साहब कोई बोला गुलजार, कोई बोला नसरुद्दीन शाह साहब, ये वो comment. I'm like, bro, मेरा ऐसा intellectual podcast नहीं है कि मैं सब ऐसे इन लोगों को लेके I want to get उदय चोपड़ा नहीं. Like I want to get like it has to be like that weird like that. But I'm the मतलब तुम लोगों ने भी काम किया ही है सबके साथ तो यार मतलब everybody has funny stories. Some you can say like I'll tell you apart from one mic stand I wrote a lot of events scripts for शाहरुख के लिए लिखा था और आयुष्मान खुराना के साथ बहुत स्क्रिप्ट लिखा था. अच्छा, before you get into that, for people who don't know, so Sapan and I have a very old connection. Oh my God, yes. We were both in Jai Hind BMM together. Yes. 2 years. 2 साल. You were in third year, I was in first year. हाँ, so we were in the same college, BMM. हम लोग ने उधर निकाला और उसके बाद there was a span of about 3 to 5 years between 2008 to 10, 11 type. Before we all became individual comics, we used to write a lot of Bollywood-based TV shows. TV shows. Channel V, MTV, बिंदास वो सब के लिए. And it had become such a thing where पहले तो देखो बॉलीवुड क्लिप्स चाहिए होते थे. उसके बाद तो हम लोग ने ऐसे शो पे काम किया कि क्लिप्स छोड़ सिर्फ फोटोज पे काम चल जाएगा. लिख देंगे भाई, कुछ भी लिख देंगे. भाई लिख देंगे, आप बताओ क्या चाहिए. और हम लोग लिटरली मैं ये एक और राइटर दोस्त है इसका बहुत क्लोज फरहान. We've sat and we've done so much Bollywood भंकस. क्या क्या लिखा है. And I'm so glad वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका कोई क्रेडिट नहीं है because the shit that we have written. And you could get away with so much. You could get away with anything by saying allegedly. बस You guys सुनने में आया है. सुनने में आया. You guys were essentially what goes on Bolly blinds and gossip. Yes. Yes. What if that was televised? Yes. Basically, it was. I'll tell you the concept. One show we did, it was called Bollywood Behind the Scenes. ठीक है. Now, behind the scenes, मैं तेरे को बोलूं ये शो है, इसमें क्या होगा. इसमें हम लोग ने 7 deadly sins लिए. ठीक है. Greed, gluttony, क्या क्या आता है भाई उसमें भूल ही गया अभी. rat, ये वो ठीक है वो सब है. And we've taken one celebrity. Then we've gone down internet rabbit hole, whatever was available at that point, of all these. इसने क्या क्या किया है, and then correlate back to suppose अक्षय कुमार ने एक मूवी के लिए बहुत ज्यादा चार्ज किया है क्योंकि उसके ड्राइवर को भी 1 लाख रुपया मिल रहा है पर मंथ. तो ग्रीड ये था ब्रो. हम लोग ने कुछ नहीं छोड़ा है और कुछ भी लिखते थे डूड. सुनने में आया है allegedly. उसके बाद कुछ भी लिख दो. Like, but I used to enjoy those, dude. That was a great writing exercise also. I remember one joke that I had written for one of these with Saurabh Pant when he read it. He's like, "Yeah, you can do comedy." One of the opening
Opening of one of these Bollywood shows was, क्या जैकी श्रॉफ अपनी बीवी को भी बीड़ू बुलाते हैं? अरे भाई, He's like, yeah, you have it. Come ride with me. Bro, बहुत मजा आता था. क्या क्या What लिखा a- था यार? The amount of trash we wrote that time. So Hmm. that time only all these award shows and also picked up. ना, तो we all written like IFA, Filmfare, ये वो. So Ayushmann Khurrana was obviously like the go-to host that time. He was the new Hmm. kid on the block. तो उसके साथ इतना लिख लिया था. And of course we had done उसका पूरा stand-up ही लिख दिया था. Roadies joke. And every time we had to think, every time Ayushmann hosts an event, we will do one bad Ayushmann Khurrana pun. तो सब exhaust कर लिया कि if I'm old, I'll become Ayushmann Purana. पुराना. When I'm itching, I'm Ayushmann Khujana. Yeah. Just like आयुष्मान पजामा, आयुष्मान मजामा, सब he's like guys कुछ नहीं पता, छोड़ दो. तो इतना कि सारे पंच एक इवेंट में, हर इवेंट में डाल दिए एक एक जोक करके. वैसे उसके साथ बहुत किया. Lot of fun, dude. I did one mic stand का एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? It was very funny. Sunny Leone, okay, Sunny Leone was a little apprehensive about doing one mic stand, obviously, because I'm guessing she gets a lot of offers to do weird shit because Hmm. of whatever it is, right? So she was generally a little like unsure कि करूँ कि नहीं करूँ. Then she agreed. Okay, so first season में क्या था, वो नहीं मानी, उसको डर लग रहा था. फिर first season she saw Richa Chadda, Taapsee Pannu route. She said, okay, this is something I'll do. तो हमने उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी है. On the day of the shoot, एक जोक है, I think it is still there in the edit, जहाँ पे ऐसा कुछ जोक है. The premise is कि everybody thinks that I am always in a bikini. हाँ, सही नहीं थी कि इंडिया में सबको लगता है कि आई एम ऑलवेज इन अ बिकिनी. तो मैं सब्जी की लाइन में लगी हूँ तो बिकिनी में लगी हूँ, एटीएम में खड़ी हूँ तो बिकिनी में लगी हूँ. दैट वाज द सेटअप, नॉट इवन द पंच लाइन, ठीक है? तो हाँ. ऐसा लिखा था कि एटीएम में भी हो तो बिकिनी में लगी हूँ. On the day of the shoot, she calls me and Neeti Palta, who's the other comic on the show, okay, on that episode. She calls us into the vanity van, and she's normally very sweet, okay, but that day she's a little irritable. She's like, "What do you mean by this line exactly? This ATM में लगी हूँ." So we're like, just we're trying to explain कि, just people think that you think like, yeah, but what do you mean by this exactly? So we're like, so we're like, do you know what ATM is? Because you're from Canada, you don't know. It's like, what is ATM? She's like, I was like, it's that where people go to withdraw cash. That is ATM. She's like, oh, and then she burst out laughing. She's like, oh, thank you so much. I'm so sorry. It was my mistake because the industry I come from, their ATM means ass to mouth. As to mouth, yeah. Oh shit. Oh shit. And she's like, what are you trying to imply with me? I didn't know. Hilarious. That's not very. Damn good, bro. He But was too Baki, good, but dude. with who did you have the most fun shooting this with? Like from all the guests that Dude, you I think had. everybody, like most people, put in a lot of time and this thing. Richa Chadda was super cool. So वो actually आई proper से बहुत लिखा. आई वो comedy club वगैरह में आई देखने के लिए. She was very chill. Shashi Tharoor was of course crazy. Shashi Tharoor Ah, was how was again that? I like, never saw that, dude. dude, but he was also like Javed Akhtar only. मतलब उसके पास time नहीं था. He was doing it in the middle of election campaign. तो ऐसा बोला, मेरा वेडनेसडे को 1.5 घंटा बैंगलोर में फ्री है, फिर फ्राइडे को 2 घंटा नोएडा में फ्री है, तो अभी तुम आ जाओ. तो हम सब कैमरा में लेके एक दिन बैंगलोर गए, उसको पकड़ा कहीं पे, शूट किया Wow. उसके साथ, फिर ये किया. बट व्हाट अ गाय, डूड. ही इज आल्सो लाइक वन ऑफ दोस नेचुरल होस्ट ने खुद इम्प्रोवाइज किया, कुछ कुछ बहुत किया. ही वाज टू कूल. Like this, I feel like Shashi Tharoor and Javed Akhtar have that similar kind of हाँ. intellect and this सिर्फ thing. एक इंग्लिश एक उर्दू. Yeah, उर्दू. एक इंग्लिश एक उर्दू. So he was also crazy. और कौन था? बाकी Chetan Bhagat was an interesting one also in a different space. Chetan Bhagat Chetan हाँ. Bhagat is peak Chetan Bhagat. The way he हाँ. talks, the way he looks, he's like that only कि मैं तो बेस्ट हूँ यार, मैं तो कर लूंगा. He's like that. So Correct. वो था. और किसके साथ शूट किया अपन ने भी? But do celebrities at the end of it, do they gain like An do they understand how appreciation for the difficult form. difficult हाँ. the Yeah. They these get it a are? lot. They get it. A lot of them are like, अरे bro, अब तो मैं करूंगा, अब तो मैं रेगुलर करूंगा, फिर कोई नहीं करता उसके बाद. Ah, हाँ. Yeah, everybody like, अरे ये तो स्किल है, ये तो करेंगे, वो करेंगे करके. And then like, dude, a lot of people have said yes and then backed out last minute. ये सब भी हुआ है बहुत, क्योंकि शुरू में लोग को लगता है कि कर लेंगे. अब देख क्या stand up, you guys know, like I think 90% of India also thinks कि what we see on stage is impromptu. हाँ. अपन Yeah. वही आके बोल लेते हैं. लोगों को यही नहीं समझ आता. अब थोड़ा समझ आता है कि अच्छा ये हम लिख के लाते हैं, ये मटेरियल 6 महीने तक करेंगे. तो लोगों को पता ही नहीं कि ये फॉर्मेट होता है अभी भी, राइट? Hmm. and yes, 100%. And the other part of stand-up, which I think is very like the thing that you have to like a big part of it if you want to continue with it is you have to have a huge tolerance for humiliation. Yeah, Yeah. You gotta 100%. have a because you polish a joke and it's working beautifully, but the next new joke you write, Yeah, you have to start from scratch. yeah. All Ultimately, the you're back. silences that come with it, Yes, the doubts that come with yes. it, your own, your own self-doubt in your own Yeah. ability
everything. Like, and then Yeah. you get to the thing. Yeah, No, It's but I crazy, think dude. for every celebrity to come and do it, and especially if Yeah. they're able to and they're chilled out enough to do self-deprecation joke, Yeah. then street cred just goes Yeah, straight, yeah, yeah. If you you do it know, well, because if you yeah, and if obviously you're you able, have to do and it if you're well. able to take a, and if you're able to take a joke, basically it's that. Correct, अभी correct, roast correct. social तो ये हो रहा है ना कि Yeah. people are like, oh, you're cool enough to take a joke, and Hmm. you're like shitting on yourself. That's cool. So I Hmm. think that happens. तेरे हाथ पे क्या हुआ है ऐसे? टेनिस एल्बो है क्या? Tennis elbow from badminton. हाँ. hilarious. Actually, tennis elbow में कुछ injury हो गई थी. I became over smart. I got obsessed with racket sports. तो मैं badminton, tennis दोनों साथ में खेलना शुरू कर दिया. एक दिन Oh. बैडमिंटन एक दिन टेनिस. So I think it operates on different muscles. तो मैं Oh, ज्यादा पुल I बुल thought नहीं it होता. was this weird game you're playing where both like shuttlecock भी आ रहा है, ball भी आ रहा है, and तू एक You're hitting a shuttlecock with a tennis racket. Tennis It's like racket. no wonder he's injured. तो But मैं this- बैक टू बैक खेल रहा था तो तू उसमें टेनिस मेरा बहुत खेलता है क्या? Do you टेनिस like रोहन hockey जोशी or and I yeah dude it's a lot of fun. We play in Juhu. Rohan Joshi and Rohan used to play, so I asked him one day, where do you play? They said Juhu, so I started joining. It's too much fun, dude. बहुत मजा आता है टेनिस खेलने में. और बैडमिंटन का तो एक कॉमिक्स का ग्रुप है, बैंड्रा. Dude, there are comic groups. There is a Bandra badminton group. There's an Andheri badminton group. I have heard I of am this. on neither? ये कहाँ है? Yeah. I've heard of तुम this. लोग नहीं खेल रहे हो. नहीं तो- नहीं मैं खेलूंगा. मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन बट मेरे को कुछ बुलाया नहीं है किसी ने कभी. Dude, it's a lot of every fun. time I come to J Spot, there's always हाँ. 3 comics who are either coming from that badminton session or going Yeah. to badminton session. Oh. Yeah. और अभी ऐसा राइवलरी हो गया अंधेरी ऐसे बीच में अंधेरी वो सब सेम में चल रहा था. Somebody, I think Biswa somebody wrote कि guys, can we have separate groups for Bandra and Andheri because we don't have this confusion about Andheri people create a separate group. No, Bandra but this tennis is a lot of fun because even Nikita, she always wanted to play a sport, okay, and she हाँ. for the last 1-2 years she's always been inquiring, अरे tennis, हाँ. अरे tennis. हाँ. And एक दिन क्या हुआ, हम लोग घर पे बैठे मूवी देख रहे. तूने challenges देखी है Zendaya वाली मूवी? I know. I've not seen it, but I know what you're talking If about. you've Yeah. not watched, please watch. Great movie. And Yeah. if you're into tennis or you want to get Yeah. into tennis, even better. ठीक है? Yeah. तो Yeah. हम लोग बैठ के challenges देख रहे हैं. सुपर मूवी और प्रॉपर उसमें टेनिस चल रहा है ये वो. इसमें आ गया जोश. अगले दिन जाके सीधा इधर ही कर दिया. And now it's been 3 months, bro. जारी She's है क्या? crazy, dude. 3 months and she's been playing and she's like, dude, it is. She's not gone to the gym. She's like, नहीं tennis. और Yeah, रोज yeah. सुबह उठ के 6-6:30 बजे आके टेनिस खेल रही है. Weather is also good अभी तो Yeah. goodish. And it's too much fun. It's a crazy workout, dude. It's too good. And तो ये if you have पैडल like a वैडल group of खेला है क्या कभी? पैडल अरे पैडल fuck all क्या बच्चे हो गेम पैडल like I I'm telling enjoyed you it, yaar. tennis I enjoyed it. I'm sorry. tennis people hate paddle and pickleball. Like my tennis coach, I told him once, let's play pickleball. He's like, don't even mention that word on the sport. they're like that purist, you know. It's like that full की बोलना भी बस इसका एकदम ऐसा हो गया था. तो तुझे मजा आया खेलने में? I played paddle with a friend of mine for the first time. हाँ. We had gone for this tour to London, so this friend of mine lives there. हाँ. He took me to play paddle, and हाँ. never played it before. So for हाँ. those of you who don't know, it is basically paddle is tennis meets squash. So they have like a glass, so it can bounce off the glass and you can hit it back. Yeah. And I rather enjoyed it because I've tried getting into tennis many times. I've never been able to get the sort of. So It's tennis is more it's actually technical. very tough. It's more Like, technical. Tennis is proper technical. It takes time. yeah, Oh yeah. 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 So for Yeah. amateurs like me who Yeah. would like to play tennis but don't have the patience for it, Yeah. so Yeah. then you going to get into paddle. It's good fun. So we play tennis in Juhu और से बाजू में pickleball का भी courts है. And you can see the age difference. Like tennis is usually like 20 to 35-year-olds, and like 45 plus Juhu uncles and aunties are coming to play pickleball on that side. Bro, but So it's become so huge that there were places in like Khar and Bandra where we used to play cricket. Okay, हाँ. तो ये था सडनली बंद कर दिया. हम लोग का रेगुलर था उधर, बंद Yeah, कर yeah. दिया. क्यों? हम लोग इसको चेंज करके पैडल बना रहे हैं बिकॉज Yeah. इन दैट मच स्पेस जिधर एक क्रिकेट का गेम चल रहा है वो 8 Yeah. पैडल Paddle. पिकल वाले कोर्ट बना रहा है. Dude, fastest growing sport in America. In the Paddle. world, In the bro, world हो गया they're होगा अभी तक तो. insane. They have a proper league and all going on now. Yeah. बॉम्बे, It's दिल्ली, crazy. बैंगलोर सब आके टीम भी मार रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और पिकल बॉल का लीग चालू हो रहा है. But there is one thing that happens. I've noticed with people around me, which is that हाँ. you cross 30 and you start firstly taking your health more seriously, and you get into some kind of like hobby of a sort. Like so, it could be Some kind of midlife Yeah. crisis. some kind of yeah. I'm into running now. I'm a CrossFit. Yeah. I'm a tennis player. I'm Whatever. a swimmer. Yeah.
Yeah. So many people I've seen, dude. Just randomly they take up a sport, and then what they do is the first thing they do, they'll take up a sport, land up at decathlon, and they buy professional grade equipment. Right? Yeah. कि, Yeah. oh, now I have to start. तो ये करते हैं, and What then did you pick up? Did you pick up something? I did running. I Oh. did a lot of running. Ah. So 2023, I had done one full, like I really got into running, and then a friend and I, we jogged from Bandra till Marine Lines. So it's like some Whoa. 21 kilometers or something like that. It was crazy. You should have waited for How many coastal times road. did you almost get run over by a car? Yeah. Or Dude, a a bike lot of coming times. from the wrong Yeah, side, or khadde a mein. Because pothole it's just more emerging. you don't jog from Bandra to Marine Line. It's a steeplechase. You just कूद के कहाँ पानी अवॉइड करने का है, कहाँ पे हर्डल जंप करने का है. कहाँ तो ऐसे मंकी बार्स पे क्लाइम करके जा रहा है क्योंकि नीचे पूरा खड्डा है. सब कुछ कर दिया. तू Yeah, आयरन yeah, मैन yeah. कोर्स कर रहा है. तू जॉग नहीं किया. You went for the Iron Man. And I can confidently tell you that Dadar has the best footpaths. Who would have thought? But I must tell you this about running. Like the thing I really like about it is that it feels to me like meditation for folks who can't sit still. Like Hmm. Oh, yeah, like nicely put. eventually, like if you keep jogging long enough, like Ah. you're focusing on your breath and your body, and it Yeah. just clears your head out. And I love that sensation. I truly like it's the Dude, that's why I like tennis for a very, I mean, of course, apart from the workout and everything, is that for 1 hour or 90 minutes, I don't check my phone even Yeah. once. Yeah. I don't care. I'm so invested in this. I'm like, this is so exciting. Fuck the Yeah. messages. Who cares about who's calling, who's this thing? Hmm. And I think we need that because otherwise you're just picking up the phone every 5 minutes and doing something. So Yeah, I'm like, dude. this is like, मतलब अभी ये हो गया bro कि show चल रहा है, movie चल रही है, फिर भी phone like double screen. It's just so annoying that you're not focusing on a movie also. You're just like checking Instagram reels while the movie's playing. Bro, Yeah, yeah, so yeah. much so that Netflix has a category of just ambient noise movies where it is Oh. so simple and like straightforward कि तू सिर्फ सुन भी लिया ना कि हर तू अगर 10 मिनट में ऊपर दिखता है तो वो समझ जाएगा कि क्या चल अरे रहा है. हाँ, मैं इसके बारे में पढ़ा था. Dude, I read Yeah, about they some actually have a genre of movies that are like that. two screen friendly movies. They are called two screen friendly movies. dude, No, ये it's मैंने called किसी ambient viewing. Second screen, ambient हाँ. viewing. Ambient viewing. viewing. So मैंने the I had read this guy's interview. Some LA में some big writer is there, one showrunner writer. He put this very angry post on Twitter talking about that he said that he wrote some very crazy like proper intellectual sci-fi show, and the feedback from the studio was this is too smart because people watch stuff as a second screen now. Please dumb it down so much that if somebody's on their Instagram, they can still understand the show. And we were yeah. like, what is going on in this world, dude? Oh, A, so इसलिए understand the सिंघम is the way it is. This is what it is. तो लोग That's why सिनेमा Singham में is भी so बैठ much के noise because you can Yeah. tell अच्छा अच्छा अजय देवगन एंट्री कर अच्छा. रहा है अच्छा Action. अभी टाइगर श्रॉफ आया है अभी action sequence चालू है. अभी एक्शन है. the thing about this also, to add to Sapan's point, they not only say ki dump it down, now you also get notes saying every some amount of time, 10 minutes, 20 minutes, something like that, give a small recap of what just happened. In 10 minutes. You know, In you know, 10, 20 we've gone minutes. back to Shakespeare. This is what used to happen. There's a reason Shakespeare plays are 4 hours long because after every act, the fool or the narrator would come back on stage and announce everything that kind of happened. That's why it's so repetitive because apparently that was the only time couples could go up and make out. So they would miss a lot of stuff. So they would miss a lot of stuff, so they could just catch up the moment the next act begins. देख भाई शेक्सपियर के जमाने से अभी के जमाने तक अगर कुछ तो देखने जा रहा है मेकआउट के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही भाई. Yes. Shakespeare, ठीक है Shakespeare Because understood his audience. अब अपने कॉलेज में होता था ना वेयर यू वुड इफ यू आर गोइंग टू मेक आउट इन अ थिएटर यू वुड ऑटोमेटिकली सी अच्छा ये कौन सा एक चूतिया मूवी है जो मुझे देखना ही नहीं है कुछ सब कुछ दम ठीक है जो मालूम है उधर 12 लोग ही होने वाले हैं सब बैठ के मेकआउट कर रहे हैं चलते रहने दे. Are you saying Grand Masti is Shakespeare? भाई ग्रैंड मस्ती फुल होता है. You go for national award winning movies. You Sorry, always go. all we imaginers Dude, liked. The thing I like about this is that Shakespeare didn't try to change his audience. Yeah. It's not He like I'm changed his gonna, art. yeah, I'll हाँ. change my art. वो ने गुस्से में पोस्ट लिख रहा है बाहर के बाहर खड़े रह के चिल्ला रहा है तुम लोग देखते नहीं हो मेरा Macbeth. He's not like Nolan. Nolan did that only ना कि उसने बोला भाई मेरे पिक्चर है तो मैं
डेब्यू होने नहीं दूंगा ओटीटी पे, मेरी पिक्चर हाँ थिएटर, ठीक है। हाँ तो वार्नर ब्रदर्स ने बोला नहीं चूतिया, अपने पास एचबीओ सब है, पब्लिक कोविड है, कोई नहीं जा रहा। तो उसने बोला माँ चुदाओ, छोड़ दिया। हाँ दैट्स इज विद यूनिवर्सल नाउ। या नहीं करूंगा, मेरे पिक्चर में मेक आउट नहीं होगा। You can't watch a Nolan movie as ambient viewing. पीछे बम फट रहा है और लोग तू विकआउट करने में लगे कंसंट्रेशन के साथ भी देखो, 2 बार देखना पड़ रहा है। In the In Nolan fact, movie, you you can't should make do out the plot. Yeah. for Nolan, you should do 2 screens, but it's the same movie. It's So I'm just watching it twice. I didn't follow actually, so I just हाँ, तो वो 10 सेकंड पीछे चल रहा है, दूसरा वाला स्क्रीन इज जस्ट। देख, हम लोग के पॉडकास्ट पे लोग आते हैं फन फैक्ट्स सुनने के लिए। आज तू आया तो तेरे को हाँ बता दूं, तुझे टेनिस बहुत पसंद है। डिड हाँ यू नो इन द 12th century टेनिस वाज एक्चुअली प्लेड विथ योर palms, Oh, have that's racket, ओ, जैसे हम लोग Palm स्कूल में racket, क्रिकेट खेलते थे, which is basically any wow. medium school यार, हम लोग उसमें Yeah. खेलते थे। टेक्स्ट It was बुक ये। it was called jeu de paume, which means Jeu de game paume. of the palm. Yeah. Game of the 18th palm. century में 16th century में रैकेट्स बने, then they started using rackets. उसके पहले हाथ से खेल रही थी पब्लिक। Dude, यार imagine दर्द अभी होता खेलेगा तो होगा कोर्ट यार। पे जाके ऐसे सूझ रहा है, मारता उसके हाथ सूझ रहे हैं। हाँ, No, यार उसका बस खाली राइट हैंड बड़ा है, वो लेफ्ट हैंड छोटा है, एंड एवरीबॉडी इज लाइक क्या कर रहा है तो अपने राइट हैंड से। नहीं, मैं टेनिस खेल रहा हूँ मम्मी, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ। yeah, you had यू द पाम, injuries. हाँ सॉरी। You had injuries like tennis elbow and tennis wrist because the Tennis हाँ, palm. yeah. बट The, सपत तेरा, मैं एक रिसेंटली देखा, तू क्या फैशन में घुस गया है क्या आजकल? ऐसे तू ट्राई कर रहा हूँ यार, तू ट्राई कर कर रहा है रहा कुछ हूँ। फैशन? कोशिश जारी है। मेरे क्या को है लग रहा है बता, कॉमेडी में, ये यार तेरा मिड लाइफ कॉमेडी में क्राइसिस है? ओके, ये फैशन वाली चीज मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है। फैशन वाली चीज ऐसा है कि 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ मैं। तू भी ट्राई करता है, ठाकुर, मैंने देखा है जैसे बहुत, तू अरे पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे। मैं अग्री कर रहा हूँ bro. मैं भी चाहता हूँ There are three, लोग four of आए। us. हाँ There are 3, हाँ, 4 of us who have been at it, saying bro बहुत एक कोशिश। फैशन ब्रांड आ जाए, एक फैशन हाँ ब्रांड आ जाए। तो मैं तो कोशिश करती रहता हूँ no, पूरे टाइम। but अभी कोई but sincerely, Sapan, like, I'm sure like fashion brand आ जाए वो तो आ ही जाएगा. But like, हाँ what was the impetus? Like, why did you like? Because I'll tell you why. Why I'm money. money, Brand came, gave money, said, "Will you wear clothes?" I yeah, was like, "Yeah, why not?" अच्छा, so you're doing it from No, a monetary no, perspective? no. No, No, I'm sure No, not. but I'm saying, I'm yeah. saying I'm sure generally Thakur, also. all the fashion influencers are all about the fashion and the art. There is Yeah, nothing to yeah, do yeah. with money. अबे नहीं रे, वैसा नहीं कि उन लोग पहले से ही फैशन कर रहे हैं और वो फैशन से हाँ फिर Hmm. उनको, हाँ इट्स लाइक अ फैशन इन्फ्लुएंसर डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी बिकॉज उसको लगता है कि yeah पैसा मिलेगा, वैसा yeah नहीं। yeah. मैं हाँ, जनरली पूछ रहा हूँ, लाइक यू आर ऑलवेज इनटू क्लोथ्स एंड यू आर, Yeah, I was gonna say this, like, not to sound this like over smart, but I think नो नो, साउंड there are साउंड, there are very there are very few comics who actually dress well on stage. This is हाँ true. Most हम्म, comics चप्पल पहन के, फटा हुआ जीन्स पहन के कई बार आए थे This is ऐसे true. करके। तो I feel like sorry, I'm That's not naming true. anybody. That's Yeah, 100% true. Yeah. mention in the comments who I'm talking about. Yeah, guys, let us know in the comments if you know who someone is talking about. Go But I'm crazy. but I'm generally saying, कि like हाँ, I know you guys also, like I feel like slightly old school people who started, like even like Rohan is there, you guys are there, like we all still Atul Khatri has started this thing ना। सुबह हाँ बोलता है ए बच्चा वैसे तो चप्पल पहन के नहीं आना ओपन माइक पे बच्चा। हाँ तो हाँ, तो we still care so many times। अभी मैं देखता हूँ कांग्रेस शॉर्ट्स पहन के ही जा रहे हैं वो। तो I always like dressing up anyway। तो मेरे को ये है कि and I realized dude, like अभी मैंने एक ब्रांड किया था, फोटो शूट किया, ये ब्रांड वर्क किया कुछ पे इंस्टाग्राम। I'm like क्या चले यार, I had to do nothing। They were like come for shoot tomorrow, there's no script, you have to go and pose, no writing of jokes, no like 8 nothing. hours sitting in front of Word document thinking a joke land हुआ कि नहीं। गया हाँ, खड़ा हुआ पोस्ट किया डाल दिया, looking good, got good photos also, got money also। I'm like yeah. bro यही And चाहिए if you लाइफ में। push little bit, you would get the clothes also, ना सीधा कि भाई या कपड़े या भी वही थे और या मस्त हम्म, फैशन। ब्रो मैं आज ही मेरे कपड़े साथ मेरा आधा वार्डरोब मेरा वन माइक स्टैंड के कपड़े पूरे। वन माइक स्टैंड के स्टाइलिस्ट से मैंने सारे ब्रो कपड़े ले लिए। ब्रो दैट्स द बेस्ट है। कोई भी अपन शूट के लिए जाता है ना, मैं या पहले ब्रांड या को पूछता, अच्छा दे सकते हो क्या कपड़े? नहीं तो मैं खरीद लूंगा। सो हाँ आई हाँ, डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम ऑफ गोइंग, या चेकिंग, It's the right ट्राइंग, fit या also. ऑल्टरिंग, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल स्टाइल। लेके आ जाओ या घर पे, ये या कर लो। आई गिव यू एन एग्जांपल ब्रो, हम लोग राइटिंग सेशन के लिए मिले, मैं और कौतुक, ठीक है, लास्ट हाँ वीक। वो हाँ अपन आके ना पॉडकास्ट का रिसर्च करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सब किया। 6 घंटा बैठे थे साथ में, 4.5 घंटा हम लोगों ने बाकी सब कुछ किया। और वो 4.5 घंटे में 90% हम लोगों ने बात की है कपड़ों के बारे में। अरे ये भाई ये वाला नया ब्रांड देखा, इसके ये मैं और कौतुक कभी कपड़े की बात नहीं करते थे बैठ के, हम लोगों ने हाँ, पूरा ये discuss कब हुआ किया है? है। मैंने आज तक I've spent the last एक 4 months with you guys. we I'll tell you, spoken this about happened. bro, This happened because of yeah.
हाँ, क्योंकि भावतुक सडनली आया घर पे फुल मस्त लेदर बूट्स, नाइस Hey, I was gonna denim say Kautik has shirt. started dressing like a dad, huh? Like he's that like boots and denim Uh, jacket and all. I saw him. He's also started dressing Dressing like a dad. like a the mature dress. Like I also started wearing these Yeah, like yeah. collar t-shirts and all. This is true. One This is second. that dad phase has started now. या ब्रो, हाँ सो हम लोग का सेम हुआ था, हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो कौतुक बोला नहीं Yeah, अभी मेरे को थोड़ा देना है अपना आपको। वार्डरोब हाँ, में देना सब है। चेंज करना है, ये वो हाँ, वी लिटरली सैड। ये एक तो इंस्टाग्राम पे अभी बात कर रहे हैं ना, उसने तो देखो भाई एक आते जाता है भाई ना एड्स, और earring, बिकॉज रोज मैं हर एड को क्लिक करके एक बार उनका कलेक्शन देख ही लेता हूँ, यस and यस it is just you name it, यस and there are like a million of these fashion brands, which is also या great because you get या like and full half of them are around 50% sale every all the time. time, all the Every time. time. how Even are when they they're like then clearly your price is actually 2500 रुपया ना, तेरा 5000 का जैकेट नहीं है वो। नहीं है, but bro, that is the hack. That is the yeah, yeah, hack. yeah. So you There's a do brand things. I actually bought a cord set from an Instagram brand. उस टाइम मैंने देखा 55% ऑफ करे ले लिया। 1.5 साल हो गया है उनका अभी तक 55% ऑफ चल ही रहा है वो। चल ही they रहा है ना। never they never went लिमिटेड टाइम डील, 100%। और वो yeah क्लॉक भी डाल देते हैं, ओनली yeah 3 yeah yeah hours yeah लेफ्ट। yeah ऐसा वाला Then they'll get you by only 2 left. yeah Only buy yeah now. 1500 bought in the last 7 seconds. Buy now. seven Buy people are now. viewing this right now Right now. 3 people are wearing it as you watch this. yeah Yeah, So, wait, but Bhatu, it's a what happened to you? We wanted to know from you. तेरे में अंदर ये फैशन का impetus कैसे आया कि तू बोला कि नहीं अभी थोड़ा yeah, किया yeah, I'll tell अलग you. टाइप का शॉपिंग? Sorry, I got a courier had come. That's Sorry, fine. but कपड़े आ गए थे ना कपड़े आ कपड़े आ गए थे। गए। So what happened with me was I used to dress a particular way. हाँ So it started like this. So when you're very young, you are trying to look older. older So yes so I used to wear like shirts, like and roll them up and stuff, and that was my yeah thing. Then in the middle, I really liked oversized t-shirts, so I got a lot of those, a lot yeah of graphic prints and all. But I think, Sapan, you're right. What happened is that very recently I looked at my wardrobe and I was like, I don't identify with the guy who wears these things. Like there's Hmm. a whole wardrobe of stuff that, and I feel like genuinely clothes are a form of like language, right? A expression form of identification. Yeah, yeah. spoken Like, like a true fashion influencer. This is a line they say at the Cannes red carpet. oh shit. No, no. I mean it in the sense that No, no, you're right. uh, what you like look like is also outward this thing of who you are, like what you're Yeah, feeling like inside. yeah, So I was like, fuck man, I opened my cupboard, sare kapde, like it just feels like a different Kautuk, different era, different guy. So I was like, shit, I need to change this. Now the problem is when you having not been like the one thing is this that when you begin to get into this, you have to change one identity inside yourself. Ki, okay, now I am a kind of person who also looks at fashion in a particular way yeah, as opposed yeah, to a guy who's like, fashion, yeah, Hmm. which I was like for the longest time. yeah, yeah. So then I was like, I just like, for me it just became getting rid of stuff. It was stuff that had been gifted over, so so I Aparna is Now like you बहुत कपड़े हो exclusively गए। wear bathrobes. यस, ये बाथरोब नहीं है, चूतिया स्वेटर पहना हुआ है मैंने। Oh, you asked was a bathroom. Yeah. So it's just yeah, वो because लंदन you're में on उधर 6 Zoom. डिग्री है। हाँ. So तो बेसिकली क्या हुआ, आई वाज अपर्णा एंड आई लाइक, अरे क्या करे, कपड़े बहुत हो गए और घर छोटा हो गया सडनली। सो शी इज लाइक, आई एम गेटिंग रिड ऑफ ऑल माय स्टफ। तो मतलब मैं एम आल्सो गेटिंग रिड ऑफ ऑल माय स्टफ। नाउ आई हैव गॉटन रिड ऑफ ऑल माय स्टफ एंड देन वन डे शी लुक्ड एट माय कबर्ड एंड सेड, आदत तेरे पास कपड़े नहीं बचे, व्हाट डिड यू डू? आई जस्ट थ्रू अवे एवरीथिंग आई वाजंट वेयरिंग। एंड राइट नाउ आई हैव वन प्रॉब्लम व्हिच इज माय सॉक ड्रॉर, where I have all these cartoon socks which I just don't wear anymore. All these Superman, all the bloody Rick and Morty sock, which I just don't wear. So the whole yeah, bottom area of my sock drawer is just, I have to take it and just give it to a child somewhere so dude, that they're happy. this happens to me a lot where again sock drawer only, like, or yeah, sock drawer, or even for example, even on the where I keep my clothes, there'll be clothes that I don't wear which are at the bottom, and then Yeah. the clothes that I do wear which are on top, and I only keep taking from the top so that Yes. that bottom sediment is not getting removed. Yeah, It yeah, just yeah. lays there like one Ultimate. fucking Bro, so I love wearing printed shirts. I love prints. ठीक हाँ, है, I'm not averse to color. मैं lavender पहनेगा, pink पहनेगा, blue जो भी है print. तो मैं अपना हाँ, shirts बनाया। मेरे latest stand-up video पे, you know what are the maximum comments? Nice shirt.
कहाँ से लिया शर्ट? कोई हाँ ये कोई नहीं बोल रहा है कि अरे फनी है ये, पहला है नाइस शर्ट, दूसरा है फक ऑल, फिर है गुड। मेरा इस पे हाँ, वन माइक स्टैंड पे कमेंट आया था, मैंने इंस्टाग्राम पे डाले भी था, somebody had DM me after watching one mic stand something, hey Sapan, just saw one mic stand show was average, can you tell me where the green shirt is from? I don't know if this happens to you guys, but when you change your wardrobe even a little bit, Hmm. you feel like people will mock you for it, or will be like, "ये तू क्यों पहन रहा है suddenly?" Right? So Hmm. I that's had in to your head. It's in People exactly, won't your mock head, you. yeah, That's in yeah, your yeah. head. People don't care. exactly. It's the I mean, same thing where people are looking at you at the gym, which in a lot of Indian gyms is true, but it's like the idea that arey, everybody is just hyper focused on you, then nobody Yeah, cares. yeah, yeah. dude, it's so refreshing because like I changed a bunch of stuff. Just I said, you know what? I'll wear it. I'll take the humiliation for whatever 3 days, and then it'll be Yeah. fine. No, but that's the thing, right? You wear it, you think they are judging you. They are not. ठीक है? They're not They at all. think you Nobody are was. judging them. You are Yeah. not. So now there's two people who are not wearing what they want to wear because they think the other person is. और ये Like सब में even ज़ारा बोल रहे आ जाओ सेल, हाँ, जाओ भाई, ले लो भाई, ले लो, ले हर लो। हफ्ते नए कपड़े ले लो फास्ट फैशन से। this is Fuck. another one कि ये मेरे को समझा ही नहीं. Like I was telling Thakur this. So when I said कि okay, I have to change my wardrobe, I said okay, let's हाँ start buying stuff. And I just had to. It was so amazing to me कि इतने सेल होते हैं साल में. हाँ इतने सेल होते हैं. Like there is a winter sale, then there is a January sale, then a turn of season, then there is a Republic Day, then there is a ब्रो, Holi. नाउ देयर There's इज end ब्लैक of फ्राइडे, season. हैलोवीन भी चल रहा है इंडिया में, अबे हैलोवीन सब सेल, चल रहा है, उन ब्लैक लोग फ्राइडे मकर सेल। संक्रांति सेल रख देंगे ब्रो, अगर उनका स्टॉक Yes, ज्यादा है तो। yes. And some, like for example, one of them is just end of reason sale. रीजन या Yeah. Good. We are out जरूरत of ही नहीं. excuses, we can't justify, but So, we'll give you discount, so ले now लो the लो question स्पेसिफिक। is, who are these people who are buying in non-sale times? ये Yeah, कौन है that's जो true. फ्लेक्स करने के अरे मैं तो ऐसे ही ऑफ द रैक फुल प्राइस? मैंने ले रही है, पब्लिक ले रही है तो ब्रो, क्यों? पब्लिक ले रही है। अबे उन लोग का रीजन होगा ना, बिकॉज अबे सी 2 हफ्ते रुक जा, सेल आ जाएगा ब्रो. लिटरली प्रॉब्लम दो क्या है, हफ्ते अगर बाद। तेरा बाय एनी चांस ना रैक साइज के आसपास है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तू देखो सेल में तो मिलेगा ही नहीं, मतलब Yeah, then you मटका have to be मिलेगा the तो छेद person. होगा उसमें, ऐसा कुछ तो होगा कि भाई ये ले लो लेकिन खड्डा है इसमें। No, then अरे yeah, हाँ, then वो बैलेंसियागा होता है ठाकुर। वो वो 80,000 1.5 लाख की रुपए टी-शर्ट का है। but then you also have to be those people who diligently, like they are those sale hawks कि Yeah. Yeah. जैसे सेल हुआ मैं घुस जाता हूँ अंदर. Bro, I'll tell you ब्रो about this. मेरी Chandni, मम्मी, मैंने अपने my wife मम्मी is को, obsessed with this. हाँ सॉरी, हम्म। हाँ हाँ, Zara sale, ठीक है। Now I don't know if you know about this. Zara sale ऐसा होता है apparently कि Zara announces some 4-5 days ago before on their app कि sale है, Wednesday 9 p.m. the sale is there. Okay. So what you have to do, and I learned this from my wife this time, is 2 days पहले you have to add everything to cart. काट या Okay. Because 6 hours or 8 hours before the sale time, Zara shuts off their app. So you can't add anything else. तो 2 दिन पहले सब ऐड करके रखो, क्योंकि 6 घंटे पहले ऐप पे यू कांट ऐड एनीथिंग। और लाइक फ्रॉम 8:55 वी आर बोथ सिटिंग रिफ्रेशिंग ज़ारा ऐप, बार बार से आई रिफ्रेश कर, जैसे ही 9 बजता है चेकआउट। ओके, एंड यू हैड 30 आइटम्स, द मिनट इन दैट 1 minute आउट ऑफ 30, 15 आर आउट ऑफ स्टॉक। या तो इट्स लाइक व्हाट बिटकॉइन खरीद रहे, क्या कर रहे हैं, दिस इज इंटेंस डूड, क्या Yeah. चल रहा या है इतना ये इंटेंस कोल्ड प्ले के टिकट्स के लिए तूने इतना नहीं किया होगा मगजमारी। लाइक लिटरली फ्रॉम अबे और तू 8:50 कोल्ड प्ले के शो के लिए कपड़े खरीद रहा है कि भाई मैं पहन के कोल्ड प्ले जाऊंगा, तो तू दोनों में लाइन में रुका है भाई, रिफ्रेश रिफ्रेश। insane, dude. I was like, क्या चल रहा है? और Zara, it's not even like some Zara में लोग पागल हो रहे हैं ऐसे करके। Bro, also when you walk into a store where there is like a flat 50% off, when you walk into that store, man, you should see the behavior of the people who are inside. Yeah. Like fucking hyenas at a carcass. ऐसा ऐसा फेंक रहा है public. I will tell you the exact same thing. Bang on. Jack and Jones in Bandra. Yeah. You do Oh one my of God. their की भैंसोद फुकट ये 2 रुपए का टी शर्ट है, आ जाओ ले लो। तो इतनी लंबी लाइन चालू होती है जैक एंड जोन से एरोप्लेन गार्डन तक, ठीक है। Yeah. इट्स ट्रांसपेरेंट, सो यू कैन सी दिस पीपल मार रहे हैं, सब कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं। नॉट इट्स नॉट इनफ, अंदर एक डीजे बजा रहा भी है, ठीक है, म्यूजिक Yeah. उधर साइड में दारू वारू भी मिल रहा है कि It's भाई like- मार के होगा तो आके दारू पियो। और उसके बाहर लगा दिया स्क्रीन, हाँ,
और स्क्रीन में दिखा रहे अंदर लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं ब्रो, मजाक नहीं कर रहा है। रिमेम्बर हम लोग रिक्शा में जा रहे थे, देख रहे थे वो कोई ऐसे टी शर्ट ऐसे पकड़े, लग रहा है कि खा जाएगा अभी टी शर्ट ब्रो कि मतलब वो कुछ खाना ले Dude, रहा है। Dude, it was fucking crazy. Black Friday in London Oh is yeah. messed up. I have seen Yes. 10,000 के जैकेट जमीन पे लोग छोड़ के चले गए हैं, पैर रख रहे लोग उसके ऊपर. Yeah, So yeah. basically what happens is you take your bag and you pick up, like the worst place is Primark. People are ओ picking up भाई shit and just putting it in their bag and deciding कि क्या करना है वो कपड़े के साथ Checkout at the पे line. बात में Checkout पे. हाँ So हाँ then there's a trail of clothes near the checkout. So there's mountains of clothes you have to go over to go check out because people have just tossed ये नहीं चाहिए, या ये या नहीं या चाहिए, ये नहीं चाहिए. By the time they have only two things by the time they check out. But लिए थे 25. Fuck, one other tip, huge tip. If you go for any of these sales, please go हाँ with another human being so that Hmm. that person can stand in the stand in the The checkout line line. line stand in the while Which is line you going to shop. be you, Sapan, Yes, yes, Adarsh, yeah yes. Varun, Yeah. Kautuk, and not only stand in line. Suddenly you'll be like, listen, can you check one in this other thing yeah and give me yeah that one? मैं बोला लेकिन अभी इधर क्या कैसे जाऊं मैं यहाँ से? Yeah. I leave bro from here. online shopping just order 30 things return Online. 15 Yeah. Yeah. return 15 just the best पर And मेरा dude, भी हो गया कौतुक most के of साथ the साथ मेरा returns भी are हो so easy कि एक ठप गया click return चल. yeah I mean, yeah I know we behave like that, but उसके बीच में ही क्या होता है, bro? I नहीं saw this. एक हाँ minute, हाँ sorry. I'll tell you this one thing, okay? I think on Nikhil Kamat's podcast, okay, one of the guys was saying कि he used to be ex Myntra. So he's like, what used to happen is that ये सेल वेल में ना पब्लिक सेल में नहीं रेगुलर इसमें खरीद रहा है, ठीक है? अभी नया Adidas Gazelle शू फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ ठीक है? अच्छा वाला जो ओजी वाला है खरीद लिया, उन लोग चाइना वाले एक ऐसी डुप्लीकेट लेके आके उसके अंदर return रखते हैं, फिर उधर कर रहे रिटर्न टू टाइट फॉर मी, तो वो लेके जा रहा है. डिलीवरी वाले को थोड़ी मालूम क्या है, उधर बैठ के भी कोई चेक नहीं कर रहा है, वो ठप because box works everything is there. So now you've got original this, you've gotten the money back and उसके 1/4 कॉस्ट का एक चाइना रिप्लेसमेंट उन्हें उसके अंदर फेंक दिया. wow So We had they talked had about this on the hordes previous, of yeah, yeah, previous they Yeah. had podcast also. hordes of fake inventory and बाहर पब्लिक रियल लेके घूम रहे हैं, बोल रहे देख भाई अपने को तो 100,000 रुपए में मिल गया जूता या कपड़ा. क्या बोल रहा था तू आदर्श? But Adidas नहीं, but Gazelle यही है shoes scams. So this is the customer scamming this, and yeah then there's the scam where what is it? There's a lot of these Instagram shopping whatever places which are showing you images. So it's basically tailors or like हाँ somebody who's showing you an image of something that is like from Europe. And ऐसे करके तब पूरा उन लोग का Instagram पेज बन गया. So you're ordering that piece of clothing expecting it to look like that. और फिर suddenly आया तेरा school uniform level का trouser. No, it's like that. And क्योंकि you उधर just फाइन प्रिंट paid में लिखा 2,000 है rupees. कलर एंड लुक में डिफर इन may पर्सन vary बिकॉज ऑफ लाइटिंग. Yes. खत्म, लीगली yeah सॉर्टेड. And yeah also, I love the faith that these clothes companies have in the ability of me to wash their garments correctly. अरे भाई. पूरा स्क्रोल आता है इतना बड़ा ये मत instruction कर, देते ये मत कर, ये Yeah, yeah. Make Bro, sure that Apple water temperature is Yeah. this. Yeah. Apple has a this now where you click a photo of that yeah वो जो yeah भी yeah तेरा tag आएगा, you click a photo and Apple actually compared iPhone to में whatever पूरा the sign दिखा is, देता है हाँ, वो तो it just tells you exactly what पर to do. कर कौन रहा है भाई सब एक ही मशीन में चड्डी बनियान जीन्स सब एक साथ डाल के 15 मिनट में वॉश कर सबका सब एक्सेल ये में धुल रहा है ब्रो ये मैं तेरे को बोलता हूँ लोची क्या है, मेरे घर पे वॉशर ड्रायर दोनों है एंड आई लर्न दिस द हार्ड वे. ओ मैं बोला चल ना वॉशर ड्रायर इट मतलब रूइंस चलता द होगा. क्लोथ्स ना ब्रो मैंने इतने सारे ये फास्ट फैशन वाले ब्रांड के टी शर्ट लिए जो जब हाँ बाहर आता है वो निकिता को फिट होता है. फिर या या जीन्स या एक बार दे मेरी शुड जीन्स आई, शी वोर द जीन्स ऐसे वैसे, आर दीस माय डेनिम? शी इज लाइक व्हाट डू यू मीन, हाउ कैन दे फिट मी? दे वर एक्चुअली माय डेनिम्स दैट श्रंक Ah. fully and now they become proper fit for her. मैं बोला ये क्या चल रहा है? तो गए मेरे 3,000 रुपए. Yeah, yeah. या ए ठाकुर तू 3,000 रुपए का बात कर रहा है. Let's get some news here, guys. The biggest scam that has hit the news cycle in the last 2 days is there's a woman in France who was duped out of 800,000 euros Yeah, by a guy who was pretending to be Brad Pitt in a hospital. These are
They used AI images. Oh, But shit. also, Dude, man. somewhere, it's like, how do you believe this? This is Brad Pitt. Like, Isn't तेरे को My that कुछ favorite नहीं समझ Fight Club का उसका पोस्टर का फेस अरे मतलब लेवल देख यार ये क्या क्या कर रहा है एंड द थिंग इज इट्स ही सेंडिंग नोट्स लाइक आई लव यू एनी to my loving wife and she's showing all these images which is just bizarre. Well, I see the wife's face. She's like, "ये photo सही तो है, ये वाला तो photo, ये तो Brad Pitt है." The way bro. she's showing it. Oh So man, too apparently funny. what happened is she got a call from हाँ वही है जैसे अपना वो डिजिटल स्कैम है कि पहले कोई हाँ तुमको कॉल करेगा पुलिस ऑफिसर टाइप जो भी आता है हाँ तो अभी ये क्या है शी गॉट अ कॉल फ्रॉम ब्रैड पिट्स मदर ब्रैड पिट्स मदर saying कि my son is in the hospital and he needs help. Can you help? And then after that, every time she's like, oh, Brad has, and it's the same wo fishing wala thing. कि he sent you gifts, but they're stuck in immigration. What do we do? Because he really wants to send you expensive gifts. तो बाद में उसके बाद उसका मैनेजर कॉल कर रहा है हे ऑल इज मनी स्टक इन द डिवोर्स विद एंजेलिना जोली सो कैन यू जस्ट तो पहले उसने 9,000 यूरो भेजा Wow. फिर वो Wow. औरत का डिवोर्स हो गया विद हर हस्बैंड वे शी गॉट Husband. अबाउट 800,000 यूरो और समथिंग उसने वो भी भेज दिया है ब्रैड पिट को Dude, crazy. firstly, it's this person's fault because what kind of ego do you have to believe कि if Brad Pitt is in trouble, of course he'll call me. He'll call me, only me. And you are not friend, family, acquaintance, कुछ नहीं है randomly उसने ऐसे नंबर घुमा दिया कि हेलो एनी प्लीज हेल्प मी अबे कम ऑन यार इसी दिन का तो मुझे इंतजार था नहीं Brad. बट ऑल्सो apparently she did her due diligence where she's like clearly not clearly she's not. she's gone and Her checked the diligence is internet due. उसने जाके देखा है कि ये फोटो जो ये मेरे को भेज रहा है ये इंटरनेट पे है कि नहीं एंड उसको नहीं मिली तो देन शी थॉट इज लाइक ओ माय गॉड ही इज क्लिक दी सेल्फीज जस्ट फॉर मी हाँ Bro, हॉस्पिटल में is मर रहा है there वो पर सेल्फी खींच के भेज रहा है मेरे को is there a AI checker? Is there of something course like there that? is there कि तू are डाल there are सकता है और but निकल सकता है कि yeah AI है कि नहीं? yeah so there are apps that you can check that this photo has been altered made with with AI. AI on some Yeah. yeah but in these kind of photos you just need your eyes No, fair. okay so Fair. AIs. yeah just the thing भाई is this the is too clever funny. part is you don't see Brad's hands because that's one way because AI imagery yeah doesn't get hands correctly उसको एटलीस्ट So पहले she था Oh. would अभी believe नए she would अपडेट में believe पता नहीं that क्या हो रहा है also. पुराने अपडेट में हाथ नहीं कर पाते उंगलियां अरे उसमें क्या वो बोल देगा my hand burnt, see my hand is not looking good. yeah Yeah. My hand Yeah, but burnt why down, do you see have 17 fingers? अरे हाथ that जला तो doctor दे fucked up. plastic surgery gone wrong. I was doing it for a role. These are prosthetics. कुछ भी बोल सकता है भाई ब्रैड पिट है भाई हाँ ब्रैड पिट है ब्रो मैं तेरे को बोलता हूँ ये वाला स्कैम जो मेरे साथ होने की उसने कोशिश करी लेकिन मैंने अपना दिमाग यूज किया फर्स्ट टाइम Oh, हाँ ठीक है और मैं नहीं फंसा ब्रैड पिट नहीं आया था मेरे घर पे बेसिकली आदमी आया वरुण ठाकुर मिला हाँ और ये ऐसे दिखा रहा है मैं अडानी इलेक्ट्रिसिटी से आया हूँ हाँ ऐसे ये तो पहली बार हुआ है कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी सामने से आ रहे हैं बेंचो वरना हम फोन करके गाली देते रहते कुछ नहीं होता है ये कोई नहीं सामने आता से है आ गया तो हाँ रेड फ्लैग मैं बोला हाँ बोल बोलता नहीं आपका अनपेड बिल्स है मैं बोला चांस ही नहीं मेरे पास पूरा साल का रिपोर्ट है मैं इनफैक्ट बिल 5 दिन पहले भरता हूँ हाँ ठीक है मैं वो वाला हूँ कि अगर मेरे को दिख गया ना आई नो इफ आई हैव टू हाँ पे द डे आई सीन आई जस्ट पेड ऑफ इफ इट्स या नॉट बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी सम $1 million राइट 1,000 2,000 4,000 5,000 जो भी है तो भर दिया बोलते नहीं आपके पास ईवी है ना मैं बोला हाँ ईवी है बोलते तो ईवी का आपने बिल नहीं भरा है आई सेड देख भाई ये ईवी का जो कनेक्टेड होता है तेरे मेन बॉक्स से और वो पूरा एक घर जो जहां से जा रहा है वहां से है सो इट्स अ कंबाइंड थिंग नहीं नहीं ये नहीं है मैं बोला ठीक है फिर मैंने निकाला फोन रिकॉर्ड वीडियो बताओ आपका नाम क्या है आप कौन हो कहाँ से आए हो देन यू कैन लिटरली सी कपल रहा मैं बोला बोलना बोलना नाम क्या है मेरे पास अभी तक है वो वीडियो fuck. एंड ही सेड अगर आपने बिल पे नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी ये 3 महीने this is good. हुआ था आप हाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन इंटरनेट इज ऑन सो एंड ही वाज एबल टू कम अप इन suddenly माय बिल्डिंग everything just goes black in Thakur's Yeah, house right now Adani was waiting for 3 months and today at 4 just p.m. for a 3 months punchline complete. आई रियली होप कि वो स्कैम ही था क्योंकि 3 महीने से लाइट तो गई नहीं है बिल भी भर रहा हूँ
But imagine, like in that building, They he showed up was at able your to come house at with the house, details bro. that he Yeah. knows that you have an EV. That's crazy. That's the thing. He knows I have Yeah. an EV. He knows where he's come and told me my name. It's Yeah. Yeah. become that easy. We've Doing up spoken to about details. scams, bro, so many times now because now Yeah. it has become so easy. This new digital arrest thing that happened, Yeah. Yeah. It's crazy, dude. they Dude, caught ये the मेरे को भी guy. कॉल आया था उसका मेरे को 2-3 बार से कॉल आ चुके हैं बट नाउ आई जस्ट कीप द फोन मेरे को ये क्या पिछले बात हफ्ते कर no. कॉल है ये यही कॉल आया कि आपका पार्सल अटका हुआ है ये वो एंड देन हाँ. आई नाउ आई रेड इनफ ऑन ट्विटर आई एम लाइक हाँ कुछ नहीं आई केप्ट द फोन लास्ट वीक कॉल आया somebody आई पिक्ड अप एंड दे सेड हाँ बोलिए बैंगलोर पुलिस स्टेशन तो I said मैं क्या बोलूं आप बोलिए and then I think he confused the script a little bit he put us saying हाँ बोलिए बैंगलोर पुलिस स्टेशन He I thought said he's आपने calling फोन लगाया Bangalore police station. yeah बोला Bangalore police station. Dude, my relative is it is sad, but it's also funny the way my relative got called. Okay, one old uncle in my family. Sorry. Okay, हाँ. he was. This happened like a couple of years ago. Somebody called him saying, "Uncle, by mistake, I was sending money to my friend, 5,000 rupees. By mistake, it got 500 rupees. By mistake, नंबर गलत डल गया आपके अकाउंट में मैंने पेटीएम में 500 रुपए भेज दिए हैं अरे तो कैन यू प्लीज सेंड इट बैक तो अंकल इज लाइक ओके बेटा आई डोंट नो कैसे करते हैं लाइक मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ पेटीएम पे वापस भेजने की समझे उनके उसने ओटीपी लेके उसने 15,000 रुपए वापस ले लिए ठीक है अंकल से नाउ अंकल हैज सीन फ्रॉम द बैंक मैसेज आया 15,000 रुपीज गॉन अंकल हैज कॉल्ड हिज सन हु इज इन ऑफिस and son is screaming saying what is wrong with you why would you do this dad at least call you for doing this uncle is angry with this young child who has scammed him so uncle calls the guy saying what did you do तुमने क्या किया how can you scam me I'm an old man he's like oh Oh uncle I'm no. really sorry अभी वापस लौट आता हूँ ये वाला ओटीपी दीजिए again 15,000 rupees gone Oh, oh no. twice in the same day shit. अरे यार. yeah Bro, there's a sad. banging movie. Sorry, because you said that and because you said the relative is Doom. older, there's a new movie that came out. उसमें same चीज हुआ है where this old lady gets हाँ scammed. Okay, and she's old, matlab she needs that scooter to move type old. हाँ Okay, she also has her grandson who she's very close to, and this and that. Very sweet. I forget the name, but what a beautiful movie where she gets conned, and then she decides, I am not going to take this lying down. And her family is like, अरे भाई रहने दे छोड़ अभी हो गया अगले हाँ बार नहीं मेरे साथ ये मेरा पूरा savings था. How can somebody con me? And then she goes on a वो full this to find the culprit. Bro, what a She hey comes to nice beautiful Kolkata, movie. Huh? and in West Bengal, she finds that one call center. हाँ नहीं नहीं ये हॉली हॉली आएंगे तो वेस्ट Dude, बंगाल ही अल्टीमेटली हाँ 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 उधर भी एक और पिक्चर है इस पे where old lady gets scammed but then old lady is so sad that she ends up killing herself and by chance her neighbor was Jason Statham and he goes on a murder Oh. spree. Oh. The movie is called Beekeeper, That's guys. the beauty Go about watch it. Jason Statham movies. He just needs a There is always reason to one. go on a killing spree. उसके आजू बाजू मार दो किसी को फिर Jason उसने Statham आके सबको मार उसने वो जाके कॉल सेंटर जला देता है सब कुछ कर दिया है. There is a but this is the new action formula, right? कि हाँ something of value. कुछ तो बुरा हुआ है भाई Yeah, हाँ puppy कुत्ता मर मर गया, गया neighbor ये मर हो गया. गया. हाँ And dude, like the मेरा other thing is the other trend is कि all action movies now have to have man in suit yeah going and murdering people. dude Hmm. I तो feel like now the stakes have also become old right पहले की फैमिली को मारा वाइफ को मारा फिर जॉन विक में बोला कुत्ता मर गया हाँ फिर कोई बोल रहा है Hmm. पैसे अभी the stakes are getting lower with every action Yeah, movie अभी या नेबर या चला गया. next is तूने मिंत्रा स्कैम पासा करने डील का कैसे हो सोचा गया कैसे किलिंग spree yeah ब्रो ये सोच रहा होता था है कुछ स्कैमर्स कभी गलत हो जाता है ना जैसे कभी वरुण को स्कैम करने की कोशिश किया तो वरुण ने फोन निकाल दिया तो अभी उसकी फट गई. सो आई फाउंड दिस वीडियो आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट दिस गाइस कॉल द अभी ये लोग ने वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम किया है. ओके हाँ सो नाउ दिस गाइस कॉल हिम. तो दिस इज द पुलिस ऑफिसर हु इज द स्कैमर एंड अंदर से yeah शर्ट वर्ट दिख रहा है उल्लू बना रहा है. नाउ लुक एट हु ही इज कॉल्ड एंड इट्स लाइक सर आप अपना फोन दिखाइए आपका पंखा दिख रहा है. अच्छा ठीक है. ही इज कॉल्ड द आईटी सेल और वो आईटी सेल वाला बोल रहा है भाई मेरे को तेरा एड्रेस मिल गया है मेरे को तेरा लोकेशन मिल गया है अब तू गया. wow that's good that's this will good be a great Abbas Vastan movie where the actual cop is also calling this guy he's it's a also double yeah scam yeah dude, it'd be double so scam funny. It'd be so funny if this IT guy gets a call. It's a हाँ. scam, but it's his superior doing it. नो तो कुछ बोल भी नहीं सकता है. one story you guys will remember this when I started doing stand up मैं ऐसा एकदम पतला चिकना इतना था तो my opening joke used to be कि
I know what you're thinking. I look like a grown-up version of Darshil Safari. Yeah. That was the हाँ opening joke for like 2-3 years, right? Used to हाँ kill. एक बार मैं ये हाँ जोक एक बार मैं ये जोक कहीं अंगद और मैं कहीं शो करे भुवनेश्वर में कहीं गए थे शो करने के लिए मैं वो शो किया ये जोक किया मैं उतरा स्टेज पे one auntie came with her son actually took a photo saying you are so good in Tara Zameen Par sir wow Oh God. she actually took a photo she thought I'm Darshil Safari Darshil Safari अब hilarious stand up कर रहा है Because she was watching your show also while being on a second screen. So she has just Yeah. heard Darshil Safari. Ah. Dude, but Darshil Safari is back in the fray. Like I saw some like random reels with Darshil Safari and yeah his like even I silly saw stuff. Yeah. yeah So that some would be reels fun. Like, are you thinking like who are you trying to get at this point? Like you want to get somebody now? ब्रो नाउ वन नाइट स्टैंड तो अभी पता नहीं हो रहा है कि नहीं अमेजोन के पास है अभी मेरे को चिल सर्च ही हाँ, करना है आई एम गोना कॉल ऑल ऑफ यू गाइस आल्सो फॉर इट तो मैं तो Yes. इट्स वन ऑफ दोस nice. थिंग्स डू यू रीच आउट टू 15 पीपल एंड जस्ट कीप अटैकिंग अभी मैं नहीं चल जॉनी तो लीवर के अगर पीछे पड़ा हूँ हाइपोथेटिकली अमेजोन हाँ बोलता है चल हाँ हाँ. तो चल लेट्स किसको मेक अ लिस्ट टुगेदर हाँ तो लेट्स मेक अ हाँ. लिस्ट टुगेदर ओके किसको लेट्स किसको लेट्स लेके ऑल गिव वन वन पर्सन ओके किसको आना लेके चाह रहा आएंगे लेट्स डू ऑफ कोर्स फर्स्ट विल बी शाहरुख ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल वांट टू सी शाहरुख है वो तो Hmm. yeah एकदम ही And I think you he mustn't be afraid to dream big darling या Siddharsh Yes. Siddharsh या Shahrukh is स्टार्ट also विद just funny in general. Like he just या like डूड even his interviews and stuff, he's very funny. अबे वो या 10 जो खुद करेगा स्टेज पे Yeah. अरे ब्रो ही इज वेरी लाइक वो स्टैंड अप बहुत देखता है जब द 2-3 times I've written scripts for him and every time I've gone and spoken to him he's like अरे तूने ये स्पेशल लिखा क्या क्रिस रॉक का नया स्पेशल आया था he's seen like everything and he I remember once he tweeted about Chris Rock's Netflix special and also I'm like oh he's actually in touch like from Richard Pryor to हाँ. now वो सब देखता the first time I met him I had gone as a writer for some event okay और वो event वाले ने बोला कि this is Sapan he's a comedian he left the whole मतलब वो बाकी मीटिंग डिस्कशन छोड़ के he discussed comedy for 20 minutes Kare, have wow you seen Richard Pryor's this special? I love this one. Like Chris Rock's this special was so good, and Sarah Silverman this. उस टाइम मैं भी नया था आधे नाम तो मेरे को नहीं पता था बोल रहा या सर वेरी गुड या सर वेरी गुड ऐसे करके तो ही इज प्रॉपर लाइक वो तो he ब्रो तो knows इसलिए तू शाहरुख को मत लेगा तू भाई को लेके आ क्योंकि देख भाई. शाहरुख तो वैसे भी करता है कॉमेडी तू भाई से Yeah. तूने कॉमेडी करा ली वेर वो खुद खुद इस पे जोक मार रहा है ओहो वो भाई के स्टेज को पहले बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना पड़ेगा हर तरफ से हाँ. And बेचारा there's यार 26 cameras on him so that you can have a sentence. but yeah that's scary bro imagine in a city like Bombay some of the biggest actors उनके who you would assume क्या सिक्योरिटी तो इनको ऑलरेडी है yeah बुलेट yeah प्रूफ ग्लास लगा रहा है इधर इसके घर पे इंट्रूडर आ crazy रहा dude है yeah insane yeah who would you guys get who would you want to see do stand up you know like Ooh. I think that not one person but ऐसे पॉलिटिक्स में एक कोई हाँ स्पोर्ट्स पर्सन एक आई कोई थिंक ऐसे स्पोर्ट्स में से एक कोई करना चाहिए अच्छे से कोई करना चाहिए because sports is that one thing now very few people have that sense of Yeah. humor to be okay like तू रोहित को yeah लेगा ना रोहित को if रोहित comes Yeah. and stand up it'll be It'll be epic. amazing बहुत funny होगा. bro क्योंकि वो वैसे भी फनी आदमी है वो yeah yeah एकदम मस्त है तो to get jokes out of him will also yeah be easier and it'll be very natural coming out from him yeah इसलिए yeah रोहित टाइप आ गया तो Yeah, or like Neeraj Pandey, like, so like नीरज even पांडे Neeraj coming, not Neeraj Pandey, Pandey, Chopra, what sorry. Neeraj Pandey, Neeraj Pandey director. is a filmmaker हाँ, but Neeraj Chopra कभी gone, that would also be fucking funny. Like it's just yeah like, yeah, who it will actually actually people who might, have not done like I feel like हाँ. Diljit Dosanjh might also be interesting हाँ Oh yeah, You know yeah who I'd like to see do comedy, and only for just the visual image of him doing comedy, the great Khali. dude, he is oh very yeah funny. he's Just actually Dude, very there are one a funny huge couple of dude, videos. tiny mic, नहीं, small stage. yeah bro, उस पे बहुत आएंगे funny. कमेंट खली भाई चुटकुला को फेंक के स्पेशल बना दो हाँ, नहीं वो नीरज चोपड़ा फेंकेगा ना one mic stand. वैसा वाला Is there anything you've been like Googling? Is there anything that you're obsessed with at this moment? Like anything in your algorithm, your YouTube feed, something that's constantly popping up? Let us see अभी तो मैंने सेवरेंस देखा तो अभी तो मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ भाई नया आ मैं तो रहा है वही फ्राइडे को भाई नया आ रहा है तभी तो देख लिया मैंने तभी तो मैं वही मजेदार देखने में लगा हुआ हूँ बहुत ज्यादा उसके और देख थोड़े बाकी एक्सप्लेनर वीडियोस देख ब्रो इट विल ब्लो योर it's माइंड crazy no वही how it's the crazy attention to crazy detail that they have and how they've foreshadowed so many things yeah and yeah when yeah you're watching it it's because in terms of production in terms of yeah storytelling production design this yeah fucking beautiful bro it's insane beautiful dude it's insane अभी slow तो मैं burn बहुत है मूवीज but वही देखने में लगा हूँ eventually it's amazing yeah 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 yeah
मतलब from what we discussed yesterday, the only thing left was like BMM stories कुछ करना हो तो कॉलेज एंड BMM का कनेक्शन हो तो वो कुछ कर सकते हाँ हैं तो बता तेरे करना हो लाइफ तो का कुछ बीएमएम वाले कुछ एनी यू हैव एन हाँ एम्बैरेसिंग स्टोरी दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस. I think BMM generally is an embarrassing phase in everybody's Yeah, life. Well, so I'll tell you now. I remembered this. I remember the first time I saw Varun Thakur. Okay, this हाँ. you. I saw him. I think I met that's Varun Thakur always before. embarrassing. That's always embarrassing. Before this, also met Varun Thakur. My first day in BMM first year. Okay. अभी क्या होता है लाइक माय ब्रदर्स एंड ऑल हैव डन इंजीनियरिंग ओके और इंजीनियरिंग उस टाइम पे से रैगिंग वैगिंग होती थी कि सीनियर्स आके पीटते थे मारते थे ये करवाते थे पुशअप करवाते थे ठीक है बीएमएम मतलब दिस वाज लाइक 15 हाँ. 20 इयर्स अगो ऑल दैट यूज्ड टू हम्म. हैपन ना तो हम्म. बट बीएमएम में क्या रैगिंग है seniors have come third year seniors have come to class and they're like okay now everybody will walk the ramp for fashion show that's the ranking Oh, and to हम लोगों to ने show यही how वहां किया से to था. तेरा walk फैशन and to वहां show से तेरा फैशन शुरू है. and to show how to walk the ramp they've called Varun Thakur अरे okay What? yeah Bro, मेरे को and कैसे Varun याद Thakur नहीं is है? in his long curly hair okay with a t-shirt as a collar up karke he's come and he's walking the ramp in the middle of the classroom and he's Oh, telling us ऐसे ramp walk करते हैं dude, that's ये सच में क्या था? yes you came Oh, with Pashyam fuck. and Sharna and all these people I हाँ remember हाँ और हाँ. फिर हम सबको लड़कों को रैंप वॉक करवा रहे हैं ये दिस वाज रैगिंग अपेरेंटली कि बस चलवा दिया क्लास में कि वॉक द रैंप You have walked there. Shit, crazy. बट यार टाइम Sabir, पास है आई लव I have seen you and Sahil, हाँ and there's one more dude who used to always be with you guys in your Jai Hind contingent. I think हाँ you were like used to be the contingent lead or like yeah used yeah to, yeah yeah yeah, yeah yeah, we've yeah. done only all this shit dude At so many festivals, at Polaris, at so many of these things. Like so, यही किया है डूड क्या क्या कुछ भी किया है और फैशन शो के नाम पे भी कुछ भी होता था बीएमएम में थीम एक बार मुझे याद है लाइक मूवी थीम ऐसा कुछ कार्टून थीम तो एक बार फ्लिंटस्टोन्स थीम दे दिया है तो मैं मैं डायनासोर आउटफिट पहन के मगरलाल वाला ड्रेस वाला से डायनासोर आउटफिट पहन के मैं रैंप वॉक कर रहा हूँ which actual fashion show will have you wear a green dino outfit yeah. and walk the ramp the kind of shit that we have had to do dude it's crazy कुछ भी करवाते थे मैं तो प्रोजेक्ट में भी कुछ भी किया है did you do in BMM you get to major in either advertising or journalism Advertising. which one did you pick Advertising. advertising Most Thakur people, was yeah, maybe advertising. Bro, I'll tell you one BMM project story, ठीक है? हाँ I forget what subject it was, but they said हाँ that you have to come up with a new product. हाँ वो था ना एक प्रोडक्ट बना दो खुद का हाँ और फिर वो हाँ प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करोगे ये शार्क वो टैंक ठीक है. तो मैंने बनाया प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट इज अ रिमोट कंट्रोल दैट मेन कैन यूज टू कंट्रोल विमेन. तो अगर कोई चिल्ला रहा है तो तुम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो. ये सब वो टाइम में चुतियागिरी ये सब चलता था ना. और वो वाह हिलेरियस ये वो ठीक है. इसके हम लोगों ने वीडियो वीडियो बनाया है. वो टीचर भी अरे हाँ हाँ पब्लिक हंस रहा है. डिफरेंट टाइम राइट अभी yes 20 साल पहले. उसके होने के 6-8 महीने के बाद एक मूवी आ गई है एडम सैंडलर. क्लिक. oh click Oh. या ब्रो. oh shit he stole your Oh, BMM idea Yes. So this I is so what I Adam did Sandler does. I did. I was one of those who did journalism. Okay, oh and I should have shit. known that time only how shallow I am as a person and how much I'm inclined towards not doing serious stuff. Because journalism में एक subject था reporting. ठीक है. अभी Hmm. reporting का क्या project दिया उन्होंने बोला कि students go out and report an event or incident happening in the city. तो ऐसे बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाई कई स्कूल में आग लग गया तो somebody's gone and reported that event कि JJ school something fire broke out. Somebody written there was an accident on the Sakinaka highway something something something. मैं गया हूँ सैटरडे नाइट को महालक्ष्मी ऑलिव्स में GQ नाइट कवर करने. मैंने बोला यूज एंड रिपोर्ट एन इवेंट तो बाकी Yeah. लोग एक्सीडेंट कवर कर रहे हैं फायर कवर कर रहे हैं आई एम लाइक सो कोयल पुरी वाज स्पॉटेड एंटरिंग विद दिस वन सो लाइक व्हाट द फक इज दिस आई एम लाइक रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग कुछ भी Yeah. करके Yeah, yeah. Fair, fair. Why not? And now that is the main kind of reporting. That is That what is is Yeah, what bro. dominating all news cycles. So you were तो for यही है yeah, dude. तेरा foresight You अच्छा you'll था. get the Viral Bayani certificate of excellence. But it's dude BMM was too much fun dude I think like just Yeah, I would the not amount trade of that time for anything. For yeah sure. yeah 100% Like क्या यही कॉलेज शोज यही सब किया है वहीं तो स्टैंड अप वगैरह करना शुरू किया सबने वहीं से तो फर्स्ट आइडिया टाइम है ब्रो. मेरा फर्स्ट या जोक ये था कि केबीसी में ये जो करते हैं ना लोग वो और कैसे उन लोग हाई करते हैं ना ऐसा वैसे हाँ लाइक दैट क्लीनिंग द इनसाइड ऑफ योर टीवी. अरे अपलॉज ब्रेक पब्लिक. तो मैं हर कॉलेज फेस्टिवल में जाके यही कर रहा हूँ. टू नट्स. मच फन सही है. ब्रो एनीथिंग यूड लाइक टू प्रमोट बिफोर वी रैप. तेरा भी टूर वोर चालू हो रहा है ना? टूर चालू है टूर चलते रहेगा पूरे साल मैं बिकॉज ऑफ द बेबी नाउ आई एम टूरिंग आई एम डूइंग द स्लो टूर मतलब मैं सिर्फ महीने में 2 शो कर रहा हूँ बस
Nice. because I don't want to travel too much. You're So crawling basically. I'm crawling with the baby slowly. Crawling. I am like Kautuk jogging from one city to the other. So मैं कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे. So my show is called Lower Back Pain. Tickets are all on Book My We'll Show put on it my in website. the we'll put it in the Yeah, link yeah, below. yeah. तो बस नया शो है. तो just come and enjoy. Come and watch the new show, dude. That's always too. I think all of us are always doing some of the other show. You guys are also on with your TIS tour. Hey, how's the TIS tour going, dude? Like Must, collective bro. traveling together. Oh Bro, yeah. that is the best part. हम लोग I think we do the show Man. so that we can get to hang out together. Yeah, Yeah. that ये is हम one लोग thing I करते हैं miss. basically. That is one thing I miss about not doing collective tours together. Hmm. Yeah. Just traveling together. वो अकेले I- में ऐसे तो बैठा रहता है फिर रूम में फिर यार क्या है फिर ये अभी हम लोग तीनों जाते हैं ब्रो हम लोग पूरा एक तो पूरा टाइम हंस रहे हैं ठीक है हाँ, क्योंकि हाँ. ये तीनों साथ में अनफिल्टर्ड ये किधर रिकॉर्ड होके इसका पॉडकास्ट नहीं बन रहा तो नहीं रहना. हाँ. हम लोग तो प्रॉपर तो नहीं रहते ना फिर चालू ये Yeah, वो yeah, yeah. ब्रो हम लोग कितना हंसते हैं कि बाय द टाइम यू गो टू द शो ना यू आर ऑलरेडी टायर्ड बिकॉज वी हैव Yeah. डन 6 hours of a show basically. Yeah, yeah, Yeah. yeah. Basically. Dude, the amount of like to have like when you have a shitty hotel room sometimes, just to have like you've got your own little echo chamber of अच्छा दो और लोग हैं जो साथ में गाली दे रहे हैं होटल Yeah, को. yeah, yeah, Just yeah. that. Oh man, too much fun. Traveling together is that is one thing I miss. उसमें मजा आता है. अभी ऐसे अकेले रहता है कितना भी बढ़िया किल शो के फिर क्या रूम में बैठ के खा रहा है Yeah. पास्ता Then you're टीवी देख रहा back. है. Yeah. अरे वो Yeah. पास्ता ही होता है भाई आलियो ओलियो हाँ. खाता हूँ थोड़ा प्रोटीन साइड पे वही थोड़ा काब्स वही. चाहिए कि मैं इतना अच्छा Yeah. शो किया है बट अभी मैं अकेला हूँ तो मैं या काब्स या अभी कुछ चाहिए. ट्रैवलिंग इन ग्रुप टू मच फन. अभी मेरे को लग रहा है एक बार ऐसे एक AIC टूर करना चाहिए वापस सबको लेके आके सिर्फ जस्ट फॉर घूमने के फन. लिए हाँ. सिर्फ घूमने के लिए डूड. इट्स अबे सो मच फन. नहीं 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 सपन अपन all dads tour करते हैं. दैट्स अ न्यू कलेक्टिव. Please, all dads All tour. all dads collective is a nice new All idea. dads And if collective. that gets successful, then suddenly comics will be adopting babies just immediately. It's like मेरे को 9 महीना ये क्यों मैं why should I go through this cycle? Just adopt a baby, get on the tour. This is a successful enterprise. It is a good idea actually. हाँ. Let's करते do हैं it. भाई. Guys, if you like Dad's Collective as an idea, let us know in the comments. Go buy tickets to Sapan shows. Follow his YouTube, Instagram. Yeah. Follow us also. We always forget to say this up top. Please अरे make sure you यार. like, share, subscribe. Like. Please हाँ. share the videos with your friends, family. थोड़ा करो, थोड़ा engagement दो, likes दो, subscribe करो. And yeah, that's it from this episode. We'll see you again next week. Until then, it's goodbye. Take care. Tada. Salamesh. Thank you. ये कहाँ से आ गया Okay, भाई बलून? guys. अरे ये पता नहीं यार ये होता है. Hold up.